cases after scrutiny are put before a judicial. Mr. Faisal, यहाँ पे एक चीज और क्लैरिफाई कर दीजिए। 191 के तहत अगर फुल कोर्ट की मीटिंग कॉल करनी है तो किसने कॉल करनी है? Where it is written? Who will call the full court meeting? So that is to be called by the Chief Justice. It says the committee now. Where it is written? So this is the practice. Committee will, including meetings and constitution of benches, with the committee now. Sir, वो full court meeting की बात कर रहे हैं, not the constitution of benches. तो इसका मतलब Sir, that is a practice. Your lordship. नहीं तो practice तो यही है ना कि that is to be done by the other Chief judges Justice. can call the meeting and amend the rules, Yes. and they do it. Sorry? If the Chief Justice doesn't want to amend the rules, then the other judges can call the meeting and amend the rules. Sir, these are very difficult questions which I need to really think आपके about. सामने एक सिचुएशन चीफ साहब ने रखी है जी बिल्कुल. कि अगर मैं केस फिक्स नहीं करता तो क्या रेमेडी होगी आपके सर पास? मुझे इन सवालों the other judges would be silent spectators. Yeah. Can they call the convene the ये जो meeting and amend the rules? conflicts है within judges, इनके बारे में इसका जवाब इसी लेजिस्लेशन में दिया हुआ है। 2 सबसेक्शन 2 पढ़े। वो कमेटी की मीटिंग फिर वो कमेटी वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस इससे ऊपर जब शुरू करेंगे तो उसमें कौन सी चीज रह गई है? एवरी कॉज अपील मैटर वो बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे सब कुछ हो जाएगा। नहीं सर ये जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस हैं, उनका सवाल वो सवाल ये है कि इसमें कौन सी चीज है जो इसमें ओमिट की गई है। सर आई वुडंट लाइक टू रीड मैटर एज इन्वॉल्विंग फुल कोर्ट मीटिंग्स। ये पहली दफा सिचुएशन अराइज हो रही है जैसे अभी पॉइंट आउट किया गया, तो उसको हम एग्जामिन कर रहे हैं, तो वी नीड योर असिस्टेंस। व्हाट इज योर व्यू पॉइंट? फुल कोर्ट कॉल करने का तो वैसे भी रूल्स में तो कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं, बिल्कुल नहीं। दिस इज देखिए साहब जी लाइटर नोट, इतने पैसे क्लाइंट ने नहीं दिए। अब मैं अपने आप को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। These are very difficult questions, my lord. I really have to think about that these conflict within judges, how are those to be resolved, whether writs are to be issued, what are the other mechanisms. These have no easy answers. मुझे इस केस के ऊपर सोचते हुए इतने हफ्ते लग गए. I think what your lordships are taking will take me 6 months to really think about. मिस्टर सिद्दीकी, हमने सुना है कि यू आर ए स्पोर्ट्समैन। कभी कोई टीम ऐसी देखी है जिसके 3 कप्तान और वो जीती हो? And Mr. Siddiqui, you can ask for the in-camera proceedings. Sir, वैसे सिद्दीकी साहब, स्पोर्ट्स से मेरा भी ताल्लुक है, कप्तान और वाइस कप्तान जरूर होते हैं। सर सुप्रीम कोर्ट में होपफुली कप्तान भी होना चाहिए, सर लेट्स मूव ऑन। आई जस्ट रनिंग थ्रू। सिद्दीकी साहब, कैप्टन एक ही अच्छा लगता है। Sir, Section 4, sir. Section 4 says that whenever an interpretation of constitutional provision is involved, a bench not be less than 5. I think That is again a dictation. My lord, I mean it is. Shall not be. My lord, it's. Why can't the committee say, well, this is an important matter? But how will that affect? If there is a substantial question of law, I don't have a question of how will it affect. All along my question is, who is saying it? Who is constitutionally competent to lay down this principle? If this rule can be laid down by the court in its rules, and if Parliament has legislative, in terms of its rule-making powers under 191. Sir, if Parliament has legislative power, then your lordship has to see whether this rule violates the principle. That's a big if. Yes. If Parliament has no legislative power, then this law goes, this provision goes. Otherwise, one looks at this provision. Mr. Faisal, according to you, the Parliament has the Yes. And the only move on. According to you, Parliament has the power. We will decide whether Parliament has power or not. Not move on. ये clarity इसमें सिर्फ ये if the Parliament, if we come to the conclusion that yes, of course, Parliament has the power to make a law, then in law the Parliament may use the word may or may use the word shall. But even Parliament cannot make a law which will destroy the power of the Supreme Court to make rules,
and violates the independence of the judiciary. Okay, so tomorrow the Supreme Court full court says, well, we think 5 judges are not enough, or 5 judges are too much, we want to make it 3. Can they do it? In terms They of this, cannot, according in to the you, presence they of this law, they cannot. Yes. Yes. So And sir, that means a power of this court has been trumped by a Sir- legislative instrument. sir, ye, चले आगे बढ़े ना ये आप the question should be what fundamental rights or independence of the judiciary has been violated. The only thing was that it's a bit badly drafted. The term is actually a substantial question of law involving interpretation. यही term use हुआ है Article 185(2)(f) में और यही term देखिए कोई नई बात करें तो जी, फिर दूसरों को जी, सुनने जी, दो। जी एक सर, सेकंड, एक आपने क्या दिया, 3 को रीड डाउन कर दें, सिर्फ 3 को. ठीक है, 4 is badly drafted. अभी हम 4 पे आए हैं, अभी आगे 5 Sir, पे you have an uphill no, task. no, but sir, the point is, has ever a law been struck down because of bad drafting? No. Or being No. impractical? A law can be struck down on various grounds. Yes. One of which is it is vague, it is unclear, it is Not on beyond, bad drafting. It is beyond legislative Yes, competence. but not on bad drafting. अब एक criminal lawyer ने ये law बनाया तो वो constitutional problems तो कुछ होंगी सर. Sir, section 5 sir. Is that a confession? You are saying it behind his back. Sir, मुझे तो यही समझ में आता है. नहीं ये ना अब करिए। now I come to the main question, which is this problem of a full court and there being no appeal. And the problem that if there are 8 or more if there are 9 judges, there would be no appeal. नहीं मगर इससे पहले तो आप ये तो आपने गिवन कर लिया प्रॉब्लम है। देखिए ये ऐसे ना अप्रोच, नहीं, मैं आप नहीं देखिए कहा। मौजूदा सूरत हाल में बेहतर थी खराब थी, ये तो कहना ये प्रॉब्लम है कि फुल कोर्ट हो गया तो अपील नहीं है, तो फिर आप इस कानून मैं इसका जवाब दे रहा हूं। नहीं जवाब नहीं होगा, ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं हो सकता है। सवाल इसलिए नहीं उठेगा, सवाल तो valid नहीं, है। जरा सुन तो लीजिए ना, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। मौजूदा सिस्टम क्या है, इस कानून को एक तरफ रख दीजिए, आप जरा तवज्जो दीजिए। जी जी। मौजूदा सिस्टम ये कि इस कानून को 1 मिनट एक तरफ रख दीजिए जी। अब कौन सी अपील है ही नहीं ना। तो अब आप कह रहे हैं ये कानून जो आया है 99% खामियों और परपोर्टेड खामियों को दूर करने के लिए, वो इस लिहाज से बुरा है क्योंकि वो 1% केसेस जिसमें फुल कोर्ट होगा कोई अपील नहीं है। तो पहले तो फिर अगर आपका ये बात मान ली जाए तो आप फिर तो आप ये कह रहे हैं, आपकी बात में ये इम्प्लाइड है कि ये कानून दुरुस्त है। अब आप 1% के लिए भी अपील प्रोवाइड कर दें तो फिर ये निकलेगा, या तो आप कहेंगे कि जी 99% तो मसला सॉल्व हो गया, 1% कराएंगे। मैं यही बात कहूंगा कि the mere fact that there isn't an appeal in certain category of cases would not make the law unconstitutional. And I tell you why. There may most certainly be a difference of opinion. One person can think that this is not relevant, but I think that it is very relevant, because when the law gives a right of appeal and the committee has the option of taking that right of appeal away, then it is relevant to the person whose right of appeal has been taken away. If we recognize appeals as being substantive, then that so-called arbitrariness that is being controlled, I don't see how it's being controlled. Because किसी को right मिलेगा, किसी को right नहीं मिलेगा. Again the question will be, ये कैसे decide होगा? Again we'll go looking and hunting for principles, कि कौन सा principle apply करें. So on the face of it, it means that either you can't ever constitute a full bench, you can't constitute a bench which is more than 7 or 8 members, that's it. You're not allowed to do that because Parliament has said appeal होनी चाहिए, और appeal होनी चाहिए का मतलब है that every order of the Supreme Court under 183 has to have a right of appeal. It doesn't mean that I have the option to choose कि अब full court बैठ गया तो सब अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सब ने केस सुन लिया. Right of appeal is a right of appeal, which we've heard at length yesterday, how we recognize that right of appeal, how Islam recognizes that right of appeal. So यहाँ कैसे हम वो right ले लेते हैं वापस and कहेंगे नहीं यहाँ नहीं है क्योंकि हम सब बैठ गए.
Mr. Faisal, if you look at I mean, to me it appears to be an intra-court appeal. Yes. So at the High Court, if the larger bench is constituted, there's Yes. no intra-court appeal. Sir, So if there's a larger bench, there's no appeal. There are 3 restrictions on an appeal from a single judge in an inter-court appeal. अच्छा ये इसमें एक और बात अगर आप मद्देनजर रखें, हम अगेन realm of conjecture सिंगल बेंच इस वजह से जब डीबी सुनती है या 3 जज सुनते हैं तो इसलिए उसकी अपील नहीं जाती. लॉ रिफॉर्म itself provides an answer. The appeal provides where a single judge decides the question. जी मैं 1 मिनट आपका सर जी. देखिए हम कंजेक्चर समाज से भी बात कर सकते हैं. अब आप मुझे बताइए आखिरी इस फुल कोर्ट से पहले कौन सी फुल कोर्ट थी? I think 2015 सर. ये कितने साल गुजरे? जी 8 साल हो गए. तो हम उस केस के लिए सिर्फ फिक्रमंद हैं या हम फ्यूचर के लिए फिक्रमंद हैं? 2 बातें हो सकती है ना. एक तो पिछले के लिए हम फिक्रमंद हैं कि वो केस में वो जो 21वीं अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक राइट ऑफ अपील सलब हो गई और वो नहीं हो सकती है. ठीक है, ये एक मफरूजा हो सकता है. ठीक है. दूसरा है कि नहीं हम पिछले के नहीं फिक्रमंद हैं तो हम फ्यूचर के लिए फिक्रमंद. फ्यूचर की जब बात आएगी, जब एक्चुअल बात आएगी हमारे सामने, फिर हम अगर आप हमें इतना रिस्पेक्ट देते हैं कि हम आपस में कुछ समझ लेंगे इसको. हमें ये तो नहीं बताना है कि फ्यूचर में क्या होगा. हमारे सामने जो मसला आता है और हमेशा ही कहा गया है उसी मसले को हल करो जो आपके सामने आ जाए. अब क्या मसला होगा आइंदा, हो सकता है कभी फुल कोर्ट होना, हो सकता हो जाए. तो जब वो मसला आएगा फिर आपको सुनेंगे कि फुल कोर्ट बैठना चाहिए, 7 मेंबर बैठना चाहिए, 10 मेंबर बैठना चाहिए, वो सारे बातें इशू खड़े हो जाएंगे. अभी तो फुल कोर्ट एक ही बैठी थी, मुझे जहाँ तक याद है, आपकी बात सही है, 2015 में 21वीं अमेंडमेंट की बात. उसके बाद तो फुल कोर्ट नहीं बैठी. तो ये आई है दूसरी दफा My answer to the question. This is one way of when legislation is framed, the legislators are supposed to look at all eventualities and try as far as possible to cater for them. Now, it is so obvious that there is this defect in this law. Was it debated? Was it thought about? Was there a thought process? And thereafter, it was drafted, keeping in mind कि जी फुल अगर कोर्ट हियरिंग करेगा तो उसकी अपील नहीं होगी. And if it was thought about it, why was it not mentioned in the My provision? response would be So the obvious conclusion is that there is a flaw, and There is no flaw flaw. is so apparent there is no that flaw. everybody can see it. No, there is no flaw. It's a self-contradictory question. When you say that there should be an appeal in the full court, no legislature in the world can provide an appeal. Nobody is to the Supreme saying that there should be an Court. There can appeal. never be an appeal to the Supreme You Court. have actually There can misunderstood. never. It's a No, Mr. Siddiqui, self-contradictory the question is not whether there should be an appeal in the full court. The question is simply that how will this right of appeal be exercised if you cannot constitute a larger bench because you have been stopped from doing so. Which means that when a full court, if the committee decides, or as in this case, where a full court is sitting, if this law is upheld, that there is no right of appeal. So the question is simply this, that aapne block kar diya na right of appeal. What is the point of giving that right? कोई legislature दुनिया का अपील दे ही नहीं सकता. There is another aspect to it. But I come to the 9 judges thing. Actually, there is no answer to this question. No, so there is an answer. We go around and put a full stop to it. कि जब full court में हम बैठ के, यानी कि हमने जब decide कर लिया full court, so then there's no right of ऐसी appeal. चीज की deprivation किस तरह मांग सकती है? हो ही नहीं सकती. You have deprived someone something that the lawmaker thought was essential. I think it's That's not what you've it's done. not a problem at all. It's not a problem at all. But मैं कहता हूँ, अच्छा ये 9 मेंबर की साहब ये देखिए एक सेकंड, सेक्शन 5 में लिखा हुआ है, सेक्शन 5 पढ़ लीजिए. ये जो पावर है राइट ऑफ अपील का, आपने तीन जजेस की कमेटी को दे दिया कि किसमें वो राइट ऑफ अपील देंगे और किसमें नहीं देंगे. सर मैं उसका जवाब दे Is that correct? मैं उसका जवाब दे देता हूँ. देख, full court I don't think even a right of appeal can be demanded. Now the issue is that in cases. So no, where does the law say that? Sir, it is an impossibility. You cannot provide 50 जज भी हो जाए किसी कोर्ट की, आप फुल कोर्ट की अपील किस तरह लार्जर बेंच बन नहीं सकता.
देखिए सदीकी साहब precisely the point, that it has not even सदीकी साहब जरा देखिए इसमें it has not even been अपील में ये बताया गया है कि the appeal should be heard by the larger bench, ठीक? लार्जर बेंच के नंबर नहीं बताए कि क्या एक जज मजीद बैठ के लार्जर बेंच होगा, दो जज मजीद उसमें लार्जर होंगे। बेंच तो हो ही नहीं सकती ना इसके अंदर, जब फुल कोर्ट हो गया तो देयर इज नो लार्जर बेंच फॉर अपील। सुन लार्जर बेंच की प्रोविजन भी हो सकती है अगर ऐसी सिचुएशन आए। It's a matter of interpretation by the court and it's not. ये हम रूल्स में देख सकते हैं। इवन कॉन्स्टिट्यूशन में जरा इवन कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये इजाजत देता है whenever there is need as per the constitution a judge of any high court can be called for a particular case। तो लार्जर बेंच बनाने की इसमें भी हम रीड इन कर लेते हैं ये इसमें भी हम रीड इन कर लेते हैं कि ऐसे करना ऐसे करना। ये तो आप दो प्रोविजंस हो गए, रीड इन एक होगी बैडली ड्राफ्टेड, ऐसे ही करते हैं। रूल्स में कर सकते हैं। You cannot read down something which the legislature could never do. मिस्टर सिद्दीकी, आप रिडंडेंसी तो इस अपील में रिडंडेंसी तो नहीं एट्रीब्यूट कर सकते ना। आपने अपील प्रोवाइड करनी है नहीं, एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड रिडंडेंसी अच्छा नहीं करनी। But- लार्जर बेंच का मतलब ये फुल कोर्ट के ऊपर अपील नहीं होगी। आगे बढ़े, आपका हमने मौके सुन लिया। Hold हो गया है। Let me complete. In order to preserve that right, in order to preserve the right of appeal, in essence, you can never constitute a full court. सर बिकॉज फुल कोर्ट पे अपील हो ही नहीं सकती, तो यू कैन ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूट। तो आप उसको In that case, there'll be no appeal. flipping the argument. चलिए आगे बढ़े। आगे चलिए। सर आपका मौके सुन लिया, हमने कहा नहीं हो सकती। चलिए अगले बात बताएं। सेक्शन 2 रेट्रोस्पेक्टिविटी का इशू था। ये अपील दे दी गई है रेट्रोस्पेक्टिवली। सर देयर आर two principles which will radically reduce the right which has been given. The first was pointed out by Justice Athar. This is an appeal against orders passed under Article 184(3). If an order has been passed after that under review jurisdiction, the appeal will not lie. These are not orders which. That's the first thing. All एक सेकंड, does the law say this or this is your interpretation of the law? सर 184(3) के ऑर्डर्स है ना। अगर आपने रिव्यू फाइल कर दिया, उस पे रिव्यू का ऑर्डर आ गया। 188 अगर किसी को अभी किसी का रिव्यू पेंडिंग है एंड ही वांट्स टू रियली have the right of appeal, he has to withdraw his review. You see, there is no cut-off date of filing appeal. There is open-ended. There is a From cut-off where it date will for start. filing appeal. मिस्टर सिद्दीकी जब वो सिचुएशन आएगा हम देख लेंगे ना। सर सेकंड प्रिंसिपल मैं बता दूं। सेकंड प्रिंसिपल अभी आप मफरूजों पे जा रहे हैं, वो what may or may not happen, but just tell us। देखिए, surely it boils down to one thing. Some of us think the law should be struck down because the right of appeal is not being extended to what will happen to the scenario when there's a full court. Okay, others think it doesn't matter. Fine. I'm just saying, can you strike down a law that it creates a right of appeal, but it is to be struck down only because in one given scenario there is no right of appeal? And sir, no law can be struck down on the argument of floodgates. No law can अब be आगे बढ़े ना, आगे बढ़े। The second restriction is that in every retrospective law, your lordships have said that this retrospectivity will never apply to closed and past transactions और वो vested rights have accrued. Sir 184(3) के 1% से कम केसेस होते हैं। आप बात सुने। आपने रिव्यू निकाल दिया, आपने ये vested right argument- निकाल दी, closed and past कल ये transactions आर्ग्यूमेंट कितने केस बच गए? कल ये आर्ग्यूमेंट हुआ कि इसको आप रीड डाउन कर लें, एंड इट एक्चुअली मींस 30 days. Within 30 days of filing of the promulgation of this act, जो decisions आए हैं या before उसके आए हैं within 30 days, तब से वो limitation start होगी, लेकिन 1973 से या 1974 से नहीं होगी। ये भी argument आया और हमने note किया। Sir, I'm not arguing there is nothing wrong with this provision if these two principles are. All right. I'll move on. Mr. Siddiqui, जी 184(3) is a constitutional provision जी, sir. and it is original jurisdiction. जी sir. Appeal is continuation of the same. जी How a law which is legislative incompetence because of not being a constitutional provision that can be provided by a simple lawmaking power of the legislator.
I've extensively dealt. अगर आप मेरा note देख लीजिएगा उसमें. It's your jerky motions I just that. want to, क्योंकि बहुत वक्त हो गया है. अगर आप allow करें मैं जरा It's your jerky motions that distracts judges. They don't get to concentrate on your arguments. Sir, there is no bar under Article 184(3) that it bars that you can't create an inter-court appeal, and that has been done in other laws also. I mentioned 2 laws: the Law Reforms Ordinance, Constitutional Forum, appeal is provided. That is an entirely different premises. No, my lord, I think it is clearly, and that is what, when I had read the judgment, It has been explained by Mr. Ijazul Hasan very thoroughly that. My lord, I would beg to disagree. And then, of course, there is the appeal in the contempt of court order. But now I'll come to the most difficult part, and with the utmost respect to the benches, which is incidentally, for the third time you have said, I now come to the most difficult part. So, you're moving stepwise. Every section of this law is so convoluted and difficult that I have stated the reason why the law is so every difficult. section is the most difficult part of your argument. The most difficult part is that one never wants to say that, Your Lordship, there is a judgment which should be revisited. There are 2 judgments, and they have been rightly cited by the petitioner's counsel, my lord. One is the Bas Kakar case, where they have relied on certain principles of law and constitutional principles, on the basis of which they seek the striking down of law. I will not go into the detail of this judgment, my lord. I'll just point out the pages. Page 1993 to 1995 deals with Section 8 of the Contempt of Court Act 2012. ये कौन सा पास मोहम्मद वाला है? जी, PLD 2012 Supreme Court 923. 923. Now, my lord, इसमें कौन बताइए? sir, 993 to 995. 993 to 995 इसमें क्या खराबी है? Sir, Section 8 in the Contempt of Court Act. ये कितने जजेस का? Sir, मेरे ख्याल में 5 दिखाओ, 5 नंबर. तो देने के लिए 1 2 3 4 5 थे सर. अच्छा, इसमें ये पेजेस गलत हैं, क्यों? नहीं, ये पेजेस गलत नहीं है, distinguishable है. The reason is that if your lordships looked at Section 8, which was struck down, of the Contempt of Court Act 2012, which I have attached in my notebook, वो ये करता था कि एक जज ने कॉग्निसेंस ले लिया है एक कंटेम्प्ट का, और वो ये कहता था कि ये ट्रांसफर कर दो. चीफ जस्टिस ने कॉग्निसेंस ले लिया और कहता था ट्रांसफर कर दो. So it was really interfering in judicial orders. Now, when it came to the appeal, what the Supreme Court has done is that it has said that Section 19 में जो appeal है वो ठीक है. Those are pages 1000. Those are pages. वो दिखाना मुझे judgment दिखाना. It's para 82. Para 82. ठीक है, पैरा 82 ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. एक मिनट, पेज बता पेज नाम 1004. ठीक है, पैरा 82 हो गया, हम ढूंढ लेंगे. Para 82, and after striking down the 2012 Act, that law is revived. Now, the problem with the appellate appeals provision in the 2012 law was कि सर उसमें लिखा हुआ था एक अपील फाइल होगी, वो किसी शो कॉज के खिलाफ, हर किसी के खिलाफ, और फिर फुल कोर्ट बैठे, सारे जजेस बैठेंगे. मतलब सारा पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस ले लिया गया था, और उसमें लिखा था फौरन सस्पेंड हो जाएगी. So that was such an interference that though whatever has been said, No, but can't you reconcile it by simply saying that in that case the parliament did something so extreme, yes, to protect people of a particular who may have committed contempt, therefore the court found it necessary to intervene. Here maybe that they have not done something so extreme. And the law was, I think, unconstitutional. So वो distinguishable है, provisions देख लीजिएगा. Now I come to the judgment which, with due respect, I think if these
the law is to be upheld, this law has to be revisited to a certain extent. If your lordship may kindly see, sir, this is called the Ghulam Mohyuddin case. citation देते हैं. Sir, ये unreported है. It is 11th August 2023. 11th August, ये कितने member bench है? SMC के क्या नाम? Three member bench. नहीं, this is constitutional petition number 21, 22, 23 of 20. मैंने लगाया है सर अपनी पेपर बुक. ये कहीं रिव्यू वगैरह में तो नहीं पड़ा हुआ है? Sir, this is in review also. रिव्यू में फैसला हुआ है? नहीं. तो फिर इसको पता नहीं मुनासिब है या नहीं बात करना है इसके मुताबिक. Sir, there are passages in this तो judgment. अगर इसमें देखिए, अगर हम फिर उसको रिव्यू को redundant बना देंगे. Sir, वो बात, I think even if those passages are revisited, the judgment on its own would stand. नहीं देखिए. But there are passages. नहीं फैसल सिद्दीकी साहब, दो बातें हैं. पहली बुनियादी बात है, अगर एक वो रेगुलर उसमें आया है हमारे पास रिव्यू में, जो राइट एक्सरसाइज है, उसको हमें बात नहीं करना चाहिए. अब जहाँ तक असूल की बात है, अगर हमने इस केस में जिस तरीके से भी फैसला किया, असूली फैसला किया, अब उसका शायद असर उस पर पड़े या ना पड़े, वो तो एक अलग बात है, क्योंकि नहीं वो हम देखें, उधर जाने नहीं चाहते हैं, तो इस केस का जिक्र ही ना करें, बेहतर. My last point and then I will conclude, sir. Page 8. One thing I need to add. This law, which is under challenge now, was promulgated on the 21st of April 2023. Or review of judgments law immediately after that, which is 26th of May 2023. And if you go through, compare both laws, they are a repeat of each other almost, except that in review they said कि जी review में वही grounds होंगी जो appeal में होंगी. And it was pointed out to the. Sir, वो poem थी ना, try again वो. उसका क्या बना? Okay, you answered that. उसका केस You answered my question. Try again. There was so much desperation. नहीं, वो सेटिस्फाइड हो गया जी. उसमें भी रिव्यू है या नहीं है? नहीं, ये वाला रिव्यू वाला तो नहीं, ये जो दूसरा नहीं, ये उसी की बात कर रहे हैं. उसमें भी रिव्यू हुआ है या नहीं? जी, नहीं सर, उसी की बात कर रहे हैं. उसी की बात की. अच्छा, इसी में? जी. अच्छा, ओके. इसमें जो एक और केस हुआ, ये subsequently आया. Sir, last point, which is page 8 of my note. Whether last point is difficult or easy? नहीं सर, ये सबसे आसान है. This might actually unite the court. Sir, if your lordship comes to the conclusion that any part of this law, let's say section 3, don't throw the baby out with the bath water. Sir, ये सारी जो provisions है, अगर आप देखेंगे तो independent है. सिर्फ 3 और 4 का ताल्लुक है 2 से, और किसी का ताल्लुक नहीं है. 3 or 4 refers to the committee in section 2. Even section 2, if it's upheld, and section 3 and 4 are not upheld, it will not make a matter. So if your lordship comes to the conclusion, I hope your lordships and ladyships don't, but then the doctrine of severability can be applied in this case. It couldn't have been applied in the 2012 case. I'm very grateful to your lordship for a very patient hearing. To all your lordships and to your ladyships. Thank you. At least speaking for myself, I compliment you for answering or trying to answer all the questions to the best of your ability. Thank you. You were well prepared. Thank you, sir. I'll add my voice to that. You must thank us also. We made you exercise, lose calories. Thank you, sir. Thank you. Very kind, sir. अब कितने लोग रह गए? बता दें कौन से हैं? कोई जो मुख्तसर वाले हैं, किसी ने आप कोई नई बात, क्योंकि काफ़ी तफसीली आपको फ़ायदा मिल गया जाहिद इब्राहिम साहब और कौन थे फैसल सिद्दीकी साहब का. इसमें सबमिशन यही थी कि हमने प्रेस रिलीजेस भी इशू किए हुए थे, रेजोल्यूशंस भी थी कि फुल कोर्ट की कंस्टिट्यूशन हो. वो तो हो गया माय लॉर्ड, बगैर आपके प्रेस रिलीज पढ़े हुए. माय लॉर्ड, अच्छा, वो हमने सीएम लगाई हुई. नहीं, तो आपने जो बातें अगर लिख दी हैं तहरीरी तौर पे तो वो हम पढ़ लेंगे. अगर आपको कुछ मजीद कोई खास पॉइंट रह गया है जो इनसे छूट गया है तो बता दीजिए. नहीं तो काफ़ी अटॉर्नी जनरल मेरे ख्याल में मेन आदमी शख्स होंगे. इसमें सबमिशन यही है कि जो एक्ट पास, नहीं, आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं एक्ट को. अच्छा, तो ये बताइए ये क्यों डिवीजन क्यों आया है?
वकीलों में पाकिस्तान बार काउंसिल एक मौक़िफ़ ले रहा है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन दूसरा मौक़िफ़ ले रहा है, ये काफ़ी भाई कानूनी बहस है ना। लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट बार ने जो रेजोल्यूशन और अपनी प्रेस रिलीजेस दी हुई हैं वो इसी पर्पस के लिए दी हुई हैं। वो अगर इजाज़त हो तो मैं पढ़ लूँ। माय लॉर्ड, आपने फाइल की हुई है? माय लॉर्ड, नहीं, वो हम देख लेंगे, अगर फाइल है तो ठीक है। अब ये आपका सीएमए नंबर से बता दें। उसका आसान जवाब ये है, रीजनेबल माइंड्स कैन डिफर। यस माय लॉर्ड, और इसमें सबमिशन यही है कि रीजनेबल माइंड्स, वो आप अपना सीएमए तो बताइए नंबर। पाकिस्तान बार काउंसिल ने क्या फाइल किया? माय लॉर्ड 4207 8087 है। एक सीएमए नंबर और 8087। सॉरी, दोबारा आहिस्ता आहिस्ता कहिए, एक शख्स बोले। जी मैम, 4207 पहले है, ये अलाउ हुई है, और 8087 ये तो हो गई फुल कोर्ट। हाँ, अच्छा, ओके। 8087 दूसरी कौन सी है? 8087। 8087। हम आपको कब खत्म नहीं करना चाहते, मगर अगर वो बातें हो चुकी हैं, वो दोहराने वाली बात नहीं है तो फिर रहने दें। मतलब इसमें सबमिशन सिर्फ इतनी थी कि जो एक्ट पास हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को इनलार्ज किया गया है, उसमें कर्टेल नहीं किया गया, और उसमें अगर एक जज साहब के पास ये इख्तियार था तो वो अब 3 जजेस साहबान के पास इख्तियार आ गया है। और अगर वो विद द कॉन्सेप्ट जिस तरह कुरान में भी है कि मशवरे के साथ अगर किया जाए, इसलिए कि पहले मशवरे नहीं होते थे, तो जिस वजह से हमने और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में हमने सफ़र किया है, और ऐसे ऐसे फैसले भी हुए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहबान ने, जिस तरह जुल्फ़िकार भुट्टो केस है उसमें नसीम हसन शाह साहब ने खुद एडमिट किया था कि जो ऑर्डर हमने किया था वो हमारी गलती थी और कोई प्रेशर था। तो इसलिए मेरी सबमिशन ये है कि ऐसे ऑर्डर किए जाएं कि जिस तरह आर्मी चीफ को ये भी इख्तियार दिया जाता है कि वो प्रेसिडेंट भी बने और आर्मी चीफ भी रहे, और 4 आर्मी चीफ जो हैं वो हमारे प्रेसिडेंट भी रहे इन यूनिफॉर्म, और इस बात का तल्लुक कोई किसी कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं है। किसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं है कि एक आर्मी चीफ होगा और वो सिटिंग होगा और वो इलेक्शन लड़ेगा और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने। इसलिए ये हमारी खुशकिस्मती है। कहना ये कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे इसका कोई असर नहीं, बल्कि मतलब डेफिनेटली इसलिए कि प्रीवियसली जुडिशरी ने इंडिपेंडेंस व्यू नहीं दिया, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक इख्तियार है ही नहीं है, तो वो भी दिया गया। और उन्होंने आप क्या कह रहे हैं कि अपील का हक देकर के इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बढ़ती है, कम नहीं होती है? ये आप कह रहे हैं? माय लॉर्ड, अच्छा, इसलिए कि अगर वो राइट दिया गया है, अगर एक जज साहब के फैसले से कोई सफर करता है तो वो 3, 5 और 9 और इस तरह सुने। आजाद अदलिया। तो इसलिए मेरी सबमिशन ये है कि जिस तरह प्रीवियसली हो गया है कि जफर अली शाह केस है, उसमें फुल बेंच ने ये ऑर्डर फरमाया हुआ है कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री भी हो गए, आप कॉन्स्टिट्यूशन भी अमेंड कर सकते हो, और आपने राइटली एक पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया। तो इस तरह के अगर फैसले होंगे तो हम आगे फ्यूचर में नहीं चल सकेंगे। मेरी सबमिशन सिर्फ इतनी है कि फैसले ऐसे किए जाएं वो जो कौम को और दुनिया को नजर आए कि वो जुडिशरी ने फैसले। तो आप समझते हैं कि इस तरह हो कि आज़ाद अदलिया तो हो लेकिन कानून और आइन के पाबंद। आइन के पाबंद। ठीक, थैंक यू। यही मेरी सबमिशन है। ठीक, शुक्रिया। आपको कितने लोग रह गए? Arguments हो कैसी? Is it short or is it long? I'll try to be short. I've already had audience on the first hearing. I have filed written submissions and additional submissions, but I'll try to conclude my submissions in 1 hour, not more. Who would leave you to conclude your arguments in 1 hour? Not so. You will be bombarded with questions now. You can't get away that easy. No. I said 1 hour for me. कल आप हैं इधर? I am. कल कोई मेरा केस तो नहीं है, कोई बड़े वाले कोई पंचेस एक रखा था ना बहुत बड़ा? हाँ हाँ, तो कल फिर खैर में आप भी जरा फ्रेश हो जाएं, हम लोग भी जरा फ्रेश माइंड्स के साथ बैठेंगे। अगर आपको अगर if you're here, you're not going. I've noticed that in the first half an hour one can get away with questions and make substantial progress. You're going to regulate us. Today I noticed it. Are you going to regulate us? Are you going to tell us how we are going to conduct ourselves? I'm just hoping this is an expectation. It's a hope against hope. It's not going to happen. Regulating the Supreme Court appears to be the thing these days. Not Flavor of the day. Okay. अच्छा, आगे सर। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस संतुष्टि अच्छा होगा नंबर